Hello class, what's up? It's Raj here. So today we are discussing about the class 9 science chapter 8 motion Adya. So in this chapter there is a simple structure and easy to revise copy friendly notes for your class. So first of all, what is the motion class? What do you mean by the basic idea about the motions? So change in position with time. If the object is changing position with time, that is known as motion. For example, objects moves relative to a reference point. Okay, so what do you mean by the reference point about it? There is a object moves related to the reference point. About the distance and the time describe the motion, the distance and the time. So motion can be seen or assumed. इफ अज्यूम दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव मोशन. अगर किसी मोशंस को हम लोग देख सकते हैं या फिर उसको एज्यूम कर सकते हैं तो एज्यूमशन वाला जो मोशन है क्लास दैट इज नॉन एज रिलेटिव मोशन. उसको हम लोग रिलेटिव मोशंस कहते हैं क्लास. नेक्स्ट, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. तो दोनों में क्या अंतर है क्लास? इफ यू टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, सो इन डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल पाथ कवर्ड. जितना टोटल पाथ कवर होता है क्लास उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. और स्केलर है, स्केलर में क्या होता है क्लास? ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ अपने से, चाहे तो आप नोट कर सकते हो. देयर इज अ नो डायरेक्शन इंक्लूडिंग इन द डिस्टेंस आर देयर. नेक्स्ट क्लास, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें क्लास, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स. शॉर्ट पाथ होता है दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट्स के बीच में. सो इसमें क्या क्लास? वेक्टर है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस दोनों होते हैं क्लास. कौन कौन सा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इंक्लूडिंग इन द डिस्प्लेसमेंट क्लास. ओके, नेक्स्ट, अगर हम लोग की पॉइंट्स की बात करें क्लास, सो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. ओके, so how you can differentiate between them on the basis of your observations about the distance and the time and motion including out there. After that we are talking about class speed. Speed के बारे में बात करते हैं क्लास. So speed equals to distance per time. If you're talking about the speed, that is distance per time, that is known as speed. So SI unit is meter per second. Okay, what is the SI unit of speed? That is meter per second including out there. Okay, after that there is the types of speed. What is the types of speed? Uniform speed, that is equal to the constant. Non-uniform speed, that changes. Average speed, total distance divided by the total time including in the average speed. So after that the instantaneous speed. If you're talking about the instantaneous speed, speed at that particular moment are there, that is including in the instantaneous speed. So these are the type of speeds including out there. After that, velocity. What do you mean the velocity? Velocity equals to the speed and the direction, both are including in it, that is known as velocity. And velocity is the vector quantity class. This is called the vector quantity. There is a change in direction. Okay, the change in direction and change in velocity, so both are including in the velocity are there. After that, if you're talking about the acceleration class, what is acceleration? There is a change in velocity. अगर velocity में कोई changing आ रहा है और divided by time, मतलब time के accordingly. Okay, there is a change in velocity accordingly to the time, that is common in the acceleration. The SI unit of acceleration is a meter per second square class. After that, the types: positive acceleration, that is speed increases, and negative acceleration, that is also known as retardation. So it speed or decreases at that particular time are there. So zero acceleration equals to constant velocity, that's come under in it. After that, फ्री फॉल. इफ यू टॉकिंग अबाउट द फ्री फॉल, फ्री फॉल की बात करें क्लास, मोशन अंडर ग्रेविटी ओनली. ठीक है, जो मोशन होता है ग्रेविटी के अंडर में वो फ्री फॉल के अंदर में आता है. जैसे जी का कोई वैल्यू है क्लास, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो आपका फ्री फॉल के अंदर आता है. सो डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड्स. जो मेरा डायरेक्शन रहता है क्लास वो डाउनवर्ड्स होता है. नेक्स्ट है क्लास आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मास. मास का इंडिपेंडेंट रहता है. अपवर्ड रहेगा क्लास, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ये आप समझ लेना है. उसके बाद एट अ टॉप वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, सो दीज आर द थिंग दैट इंक्लूडिंग इन दैट पर्टिकुलर वे. सो द इक्वेशंस ऑफ मोशन, व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू u प्लस at. ओके, सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये कुछ फॉर्मूलाज है इक्वेशंस ऑफ मोशन से जिसको आप याद कर लें. ठीक है, एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, ये इसके अंडर में है. सो where u is equal to initial velocity,
v is equal to final velocity, a is equal to acceleration, s is equal to displacement, t is equal to time. So these all are completing things including are there. After that, graphical representation. So there is a distance time graph. Okay, in distance time graph you are knowing that class there is a straight line. स्ट्रेट लाइन है क्लास, उसमें क्या होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा. कर्व लाइन है, कर्विंग लाइन है, तो उसमें आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन से इंक्लूड होता है क्लास. आफ्टर दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम लोग बात करें क्लास, उसमें क्या होता है आपका स्लोप होता है जो कि इक्वल होता है आपका एक्सेलरेशन का, एरिया होता है वो इक्वल होता है आपका डिस्टेंस का. सो दीज ऑल आर कम अंडर इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो what do you mean the uniform circular motion? The objects move in a circle with a constant speed. Okay, so any object that move in a circle with a constant speed that come under in the uniform circular motion class. For example, a direction changes. If the direction changes, acceleration present in it. So these all are come under in the uniform circular motion. After that, quick revision for this. So what do you mean the quick revision of it? Motion, that is change in position. Distance is scalar quantity. Displacement is a vector quantity. So how the distance is a scalar quantity, I am explaining it right now. For example, this is specific quantity, 10 kilometer, 100 kilometer, there is no specific direction of it. But displacement, this the initial place there is a body start and the final state there the body finish. So this distance are called displacement class. Position A, position B. There is a fixed position, a fixed direction are there. So after that, this has come under in the displacement. Okay, speed, distance by time. Velocity, speed and direction also including are there. Acceleration, delta v by t, and g is equal to 9.8 meter per second square. Circular motion, accelerated motion including are there. So thank you so much guys. Please like, subscribe, share my channel how much you can. Jai Hind, Jai Bharat.